that the greatest movies of all time. So in the at least one or two movies that are constantly appear on the top spot. And one of them is the 1972 movie The Godfather, directed by Francis Ford Coppola, starring Marlon Brando and Al Pacino in the lead roles. ये मूवी बेस्ड एक 1969 के नोवेल ऑफ द सेम नेम रिटन बाय मारियो पुज़ो. सो आज के वीडियो में हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे. व्हाट मेक्स गॉडफादर ग्रेट एंड व्हाई इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द गॉडफादर एक कंप्लीट ट्रायलॉजी है जिसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था 1972 में. उसके बाद द गॉडफादर पार्ट 2 in 1974 and the Godfather part 3 in 1993. While all these three movies are great, The Godfather part 1 and part 2 are considered the one of the greatest movies of all time and one of the greatest sequel of all time. So आज की वीडियो में हम इन बाकी फिल्मों के बारे में बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ पार्ट 1 पर फोकस करेंगे. Godfather part 1 is considered the milestone in the gangster film genre. इस फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड एक इटालियन क्राइम फैमिली. विटो कॉर्लियोनी जिनका रोल प्ले किया है मार्लन ब्रांडो ने, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज यंगेस्ट सन माइकल टू द रूथलेस डॉन माइकल कॉर्लियोनी जिनका रोल प्ले किया है अल पचिनो ने. इस फिल्म का प्रोडक्शन काफी ट्रबल रहा था. मार्लन ब्रांडो जिन्होंने इस फिल्म में रोल प्ले किया था डॉन विटो कॉर्लियोनी का, प्रोड्यूसर उनको इस फिल्म में कभी लेना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि वो फिल्म के ड्यूरिंग फिल्म प्रोडक्शन ही क्रिएट्स ट्रबल. सो उसके लिए प्रोड्यूसर्स ने डायरेक्टर को कंप्लीटली नो कह दिया था कि मार्लन ब्रांडो विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. बट फ्रांसिस फोर्ड कपोला जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर इज सो कीन टू कास्ट मार्लन ब्रांडो एज जॉन विटो कॉर्लियोनी. एंड फाइनली ही वॉन ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डॉन विटो कॉर्लियोनी. So I think it's worth it to fight for the casting of Marlon Brando as Don Vito Corleone. Similarly, this is the case with the casting of Al Pacino also, जिन्होंने इस फिल्म में रोल प्ले किया माइकल कॉर्लियोनी का, जो कि डॉन विटो कॉर्लियोनी के यंगेस्ट सन है. प्रोड्यूसर इस रोल के लिए किसी फेमस सेलिब्रिटी को कास्ट करना चाहते थे क्योंकि अगर फिल्म में फेमस सेलिब्रिटी रहा तो इस फिल्म को प्रमोशन भी मिलेगा एंड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ऑल्सो बेटर एंड बिगर. द डायरेक्टर वाज सो कीन टू कास्ट अल पचिनो इन द रोल ऑफ माइकल कॉर्लियोनी. Even though Al Pacino did not win any Oscar for his portrayal of Michael Corleone, the portrayal of Michael Corleone is considered the one of the best performance of his career, and that's saying something because he appeared in a lot of great movies. अभी तक तो हमने सिर्फ फिल्म के लीड एक्टर के बारे में बात की, अभी हमने सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करना स्टार्ट भी नहीं किया. I think this is one of the best supporting cast ensemble we have ever seen for a film. We have great actors like James Caan, John Cazale, Diane Keaton, Talia Shire, Robert Duvall. And the performance of all these actors is a top notch in this movie. These great actors makes one of the greatest movies of all time. जब ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी, it was almost universally acclaimed for all its filmmaking departments. For direction, acting, cinematography, musical score, screenplay, it was almost universally acclaimed. This film won 2 Oscars for the best actor performance in a leading role for Marlon Brando and best adapted screenplay for Mario Puzo and Francis Ford Coppola. After the release of this movie has a great influence on every crime genre movie made after this movie. And one of the greatest example of it is Martin Scorsese directed movie Goodfellas and the HBO show The Sopranos. इंडिया में भी इस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक बनाया गया था. मुझे याद है उस फिल्म का नाम था आतंक ही आतंक, स्टारिंग सदाशिव अमरापुरकर एंड आमिर खान इन द लीड रोल, एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट रीमेक आई एवर सीन. एंड आई थिंक अगर कुछ वर्ती कंटेंडर के बारे में बात करूँ तो एक राम गोपाल वर्मा की फिल्म है सरकार. This film was completely inspired from The Godfather, but it's set against the backdrop of Mumbai. इस फिल्म के बारे में हम जितना भी बात करें उतना कम होगा इस फिल्म के लिए. It is one of my favorite movies of all time. अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा, I think you should definitely watch this movie. This movie is available on Amazon Prime. आज की वीडियो में हमने सिर्फ इस Godfather Part 1 के बारे में बात की. In the next video we will talking about The Godfather Part 2 and Part 3. So thank you for watching this video. See you in next one.